ये है Realme 9i, Realme का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन, और इस फ़ोन की जो प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये फ़ोन आज से अवेलेबल है फॉर प्री ऑर्डर, और उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप इस फ़ोन को प्री ऑर्डर करते हैं तो यू आल्सो गेट Realme क्लासिक ईयरबड्स फॉर फ्री। इस फ़ोन के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं देन प्रेस द लाइक बटन। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द Realme 9i। सबसे पहले बात करते हैं जो मेरा इस फ़ोन का फेवरेट फीचर है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी अपीयरेंस वाइज आई थिंक द फ़ोन लुक्स अमेजिंग। ये 2 कलर्स के अंदर आता है, प्रिज्म ब्लैक और प्रिज्म ब्लू। जो मेरे पास ये वेरिएंट है ये है प्रिज्म ब्लैक, और जो इसकी वजह है और द रीज़न वाई इज़ कॉल्ड प्रिज्म इज़ बिकॉज लाइट जो है वो इस फ़ोन के ऊपर वेरी डिफरेंटली रिफ्लेक्ट करती है। जब लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है इट शोज़ अ वेरी रिफ्लेक्टिव वेरी प्रिज्म लाइक पैटर्न ऑन द बैक ऑफ द फ़ोन दैट आई थिंक लुक्स अमेजिंग। जो इसके पीछे पैटर्न है इट लुक्स काइंड ऑफ पिक्सेलेटेड और काइंड ऑफ लाइक अ डिस्को बॉल, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली लव। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मुझे वो फ़ोन पसंद है जो डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, दैट लुक डिफरेंट, दैट ट्राई समथिंग न्यू, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फोन्स। इवन दो आई डोंट रियली प्रेफर हैविंग ब्लैक फ़ोन्स, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फोन्स जो कि ब्लैक कलर के अंदर इट्स लुक्स बेटर, क्योंकि ऑन द सर्फेस और एट अ ग्लैंस ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल लुकिंग फ़ोन, और फिर आप इसको पिकअप करते हो एंड यू turn it over the light and then it shows कि नहीं this is something different, this looks really nice, it looks really cool। इसके साइड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है which is also really fast, और जो इसका फ्रंट पैनल है वो एक 6.6 inches full HD LCD पैनल है with 90 Hz refresh rate। there is also a small chin at the bottom of the phone, और इसके टॉप कॉर्नर के ऊपर एक पंच होल है। आई एम रियली ग्लैड कि ये टॉप कॉर्नर के ऊपर है इंस्टेड ऑफ द मिडल, क्योंकि मेरी ओपिनियन के अंदर जो कॉर्नर के ऊपर पंच होल होता है आई थिंक इट लुक्स लेस डिस्ट्रैक्टिंग एंड इट कवर्स लेस कॉन्टेंट। सो आई एम रियली ग्लैड कि इस फ़ोन के अंदर जो पंच होल है वो कॉर्नर के ऊपर है। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है दैट्स आल्सो रियली गुड, द कलर्स आर रियली सैचुरेटेड एंड पंची, एंड वॉचिंग मूवीज़ और टीवी और एनीथिंग इज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑन दिस फ़ोन। इस फ़ोन के अंदर एक स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है विद 6 GB ऑफ रैम एंड 120 GB ऑफ स्टोरेज, और इसके साथ इसके अंदर Realme का रैम एक्सपेंशन फीचर भी है। उससे ये होता है कि फ़ोन कैन यूज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द फ़ोन एज रैम टू कीप एवरीथिंग रिस्पॉन्सिव एंड स्मूथ, और बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ 90 Hz डिस्प्ले एंड बिकॉज ऑफ अ गुड प्रोसेसर एवरीथिंग इन दिस फ़ोन इज़ प्रीटी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव। आई हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो कंप्लेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन, और मैंने इस फ़ोन के ऊपर एक्सटेंसिव गेम्स भी खेले हैं लाइक PUBG, एंड दे आल्सो रन फेयरली स्मूथली। इस फ़ोन का एक और जो मेजर फीचर है वो ये है कि इस फ़ोन के अंदर एक 5000 मिली पावर बैटरी है विद 33 वॉट्स क्विक चार्जिंग। एक तो 5000 मिली पावर दैट्स अ बिग नंबर, सो द बैटरी लाइफ ऑन दिस फ़ोन इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, और फास्ट चार्जिंग जो है वो इतनी फास्ट है कि इट कैन चार्ज द फ़ोन इन अबाउट 70 मिनट्स। कैमरा के बारे में बात करते हैं। कैमरा वाइज फ़ोन के अंदर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है ऑन द बैक, जिसके अंदर एक मेन 50 मेगापिक्सल लेंस है और एक मैक्रो सेंसर है और एक डेप्थ सेंसर है, और जिसका फ्रंट कैमरा है वो एक 16 मेगापिक्सल लेंस है। Realme के फ़ोन्स के अंदर नॉर्मली कैमराज अच्छी होते हैं, इवन जो लेसर प्राइस फ़ोन्स हैं उनके अंदर भी कैमरा काफ़ी अच्छे गुजरे हैं अभी मेरे एक्सपीरियंस के अंदर। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग द कैमराज ऑफ दिस फ़ोन, और फुल कैमरा को हम टेस्ट करेंगे इन द फुल रिव्यू। So that's pretty much it. मेरे जो इस फ़ोन के first impressions they're really positive and I'm really excited to use this phone. I love the trendy back of this phone. I love the pattern on the back. I love the build quality. I really like the display. And I'm glad कि 90 Hz display है इसके अंदर और performance भी इसकी बहुत अच्छी है. And also the 5000 mAh battery. So stay tuned for the full review जिसके हम इन सारी चीज़ों के अंदर in depth बात करेंगे और in depth इन चीज़ों को टेस्ट करेंगे. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like and share and everything. And I'll see you in the next one. Peace.